हेलो टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि इफ डाटा इज नॉट गिवन टू यू एज अ कॉन्टिन्यूस डाटा। तो अगर डाटा आपके पास कॉन्टिन्यूस नहीं है देन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मीन। सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट कॉन्टिन्यूस if data is not given to you as a continuous data. So in this question, the given is in a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in a packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box and which method of finding the mean did you choose? First, हम डिस्कस करेंगे डाटा कब हम बोलेंगे इट इज अ कॉन्टिन्यूस और हम कब बोल रहे हैं इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस डाटा। तो लेट अस सी ऑन द क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो क्या है आपके पास 50 to 52 एंड देन नेक्स्ट है 53 to 55, then 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64। तो यहाँ पे आपकी क्या है ब्रेक हो रहा है डाटा 52 से नेक्स्ट क्या है 53। सो दिस वन इज नॉट काउंटेड एज अ कॉन्टिन्यूस क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक हो रही है वैल्यू। और वो वैल्यू कितनी है, द डिफरेंस कितना है हमारे पास 53 एंड 52, दैट इज 1। अगेन इन द नेक्स्ट क्लास इंटरवल की अगर हम डिफरेंस की बात करें अगेन द वैल्यू इज 1। तो इसको हमने क्या बनाना है कॉन्टिन्यूस बनाना है, मीन्स जहां पर आपका एक क्लास इंटरवल की अपर वैल्यू खत्म हो रही है तो नेक्स्ट की लोअर वैल्यू वहीं से स्टार्ट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे कॉन्टिन्यूस डाटा। तो हम इसे कैसे कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, लेट अस सी। तो हमारे पास डिफरेंस कितना है 1। अब हम क्या करें कि हमारा जो डाटा है वो कॉन्टिन्यूस हो जाए। 1 का अगर हम क्या लें हाफ, वो क्या होगी आपके पास वैल्यू 0.5। So we are going to add 0.5 in the upper limit। अगर हमने इसमें ऐड किया तो ये तो बन गया आपके पास 52.5, राइट। बट अभी भी हमारे पास क्या है डिफरेंस 0.5 का है, तो हम क्या करेंगे लोअर लिमिट में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.5। so we are going to subtract the lower limit by 0.5। तो लेट अस सी अब क्या बनेगा हमारे पास न्यू क्लास इंटरवल, दैट इज 50 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 49.5। और अगर हमने 0.5 ऐड किया इन दी अपर लिमिट तो वैल्यू आ गई आपके पास 52.5। सेम अब नेक्स्ट इंटरवल के लिए भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। 53 में से हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट 0.5 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 52.5। और अपर लिमिट में ऐड करेंगे 0.5 तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 55.5। so let us write down in a same manner but we are getting 55.5 and this becomes to 58.5, 58.5, 61.5, 61.5 and 64.5। जो न्यू हमारे पास क्लास इंटरवल आई है दिस वन इज योर क्लास इंटरवल, दिस वन इज न्यू मींस दिस वन इज continuous now 52.5 and next is again 52.5। so let us take a highlighter so that you can see properly। now this one is 52.5 and this one is जो आपके नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है दैट इज 52.5। अगर इसके अपर लिमिट की बात करें so this one becomes your 55.5 and next is 55.5। so this make it continuous data। अब हमने पहले भी ये डाटा सॉल्व किया है इन प्रीवियस वीडियोस, यू कैन सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। अब अगर हम बात करें कि हम कौन सा मेथड चूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। Now, why I am going to choose this step deviation method? Why? Because you can see in the frequency values, these are very large values। अगर हम xi values भी find out करें, xi values भी अगर हम find out करें, वो values भी क्या होंगी आपकी very large values। तो उसको हमने सिंप्लीफाई करना है और
स्टेप डेविएशन में we are reducing the values in very small terms, मीन्स यूआई की वैल्यूज कहाँ पर रह जाती है हमारी 0, 1, 2 और मैक्सिमम 3 और 4, और उससे क्या हो जाते हैं आपकी मल्टीप्लिकेशन, आपकी जो कैलकुलेशंस है वो वेरी आपकी सिंपल हो जाएंगी। बट अगर यही मेथड हम कौन सा लगाएं, इसकी प्लेस पे डायरेक्ट मेथड, तो आपके जो वैल्यूज हैं, क्योंकि एक्स आई लेट अस सी क्या आ जाएंगे एक्स की वैल्यू, एक्स आई वैल्यूज वी नो दैट एक्स आई वैल्यूज दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी 51, 54, then 57, 60 and 63. So you can see these values are also very large. Your frequency values are also very large, 135, 150, 115. So अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नीड अ कैलकुलेटर, राइट। सो कैलकुलेटर क्यों यूज करना है, जब हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड है वी कैन रिड्यूस द वैल्यूज। स्टेप डेविएशन में हम यूआई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वी आर गोइंग टू फर्स्ट अज्यूम द assumed mean, so we are going to take this assumed mean 57, the corresponding value 0, -1, -2, 1 and 2. Now see, now we are getting very simple or small values. Now their multiplication fi into ui becomes very simple. Now we can multiply 15 into -2, that is -30, and then -110, 0, 115 and then 50. Now it make the calculation simple. तो आपने एक चीज याद रखनी है, अगर हमारे पास वैल्यूज क्या हैं, स्मॉल वैल्यूज हैं, देन अप्लाई द डायरेक्ट मेथड। अगर हमारे पास क्या है, लार्ज वैल्यूज हैं, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई द स्टेप deviation method. So let us add these values. It becomes your -140, and if we are going to add these values 165, we know the step deviation formula, that is a plus summation of fi ui divided by summation of fi into h. So a is your 57 plus summation of fi ui, इन दोनों को add कर दें, so we are getting 25 divide by sum of frequency is your 400, right? So 400 into h is your 3. तो अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 57.1875. So that is the mean of your mangoes. Let us take another example to understand. So here again 126 and 127, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, so 126 and 127 अगेन ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, आपका कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं है, so we are going to make it continuous. तो कैसे करेंगे continuous हम, we are going to add 0.5 in the upper limit and we are going to subtract 0.5 in the lower limit. तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल न्यू आएगी that is 117.5, 126.5. So similarly we are going to write these values. सिंपल सी बात, एक ट्रिक याद रखना, जो आपके पास अब अपर लिमिट वैल्यू आएगी वही नेक्स्ट के लिए आपकी लोअर लिमिट बन जाएगी. So 144.5, it will be 153.5, 162.5, 171.5, 180.5. तो यही 144.5 becomes now your lower limit in the next interval. तो सिंपल सी बात है, एक बार आपने कैलकुलेट वैल्यू कर ली तो नेक्स्ट में यू कैन राइट डायरेक्टली. So this becomes your continuous data. Now we are going to write xi and then we are going to take, now again I'm going to use this step deviation method, that is x bar is equals to a plus summation of fi ui divided by summation of fi into h. Why I am going to use this step deviation, because अगर मैं xi values यहाँ पे लिखूंगी that is very large. You can see here हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, is 122,
then your h is 9. See, यहाँ पे जो आपके पास h की वैल्यू है that is your 8, बट जो डिफरेंस है वो क्या है, 9 है, राइट? तो यहाँ पे हमारा जो क्लास इंटरवल न्यू है उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ h as 9. So be careful when we are going to take the value of h, we are not going to take the value as 8. ओके, सो 8 से आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वी आर मेकिंग इट कॉन्टिन्यूस डाटा, और कॉन्टिन्यूस डाटा के अकॉर्डिंग हम ये इंटरवल ले रहे हैं। तो इसका जो क्लास साइज बनेगा, जो h वैल्यू बनेगी, दैट इज इक्वल्स टू 9. सो वी कैन राइट हियर द xi वैल्यूज. सो अब हम चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ terms over here. So we are having 7 terms, so middle value will be your 149. So this becomes my assumed value. So it becomes 0, -1, -2, -3, 1, 2, and 3. Now it is very simple to calculate FIUI, that is -9, -10, -9, 0, 5, 8, and 6. Now let us add these values. So it becomes -28. If we are going to add these values, it becomes 19. So अगर हम इनको add करेंगे, so we get -9. So A we have 149 plus minus divide by frequency आपकी given है, total is 40. So 40 into 9. So अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 146.975. So that is the mean length of these leaves in millimeter. So if you understand this topic, then like and share my video and subscribe my channel.